not to continue the study. I want to go for the defense services. I passed my ND examination. My aim was to go there. So that was the you can say criteria which can be taken up by the CBSE also in that way. So here I can say whatever the percentage is given, that is satisfied approximately 80 to 85% people. 15% who are very much, you can say scorer, you can say scholar, who wants to secure more marks, they are not so much satisfied in this case. But we are supposed to take the privilege because this time we have the very pandemic condition and we are supposed to working accordingly also. What is 30, 30, 40 actually? As per the circular of 17 pages, when you see the pages of 17 circular, that is circulated in 17th of June 2021, that clearly depicted that document submitted by the CBSE to the this court, that's how we are going to calculate this marks. First of all, whatever the 10th class marks is there, you are supposed to take the 10th class marks only. It is very much clearly that everybody is saying what subject basically we are supposed to take. It clearly says. Sir, your mic is off, sir. Mishra, sir. Okay, now sorry. Please. It is clearly mentioned that you are supposed to calculate on the basis of average theory components of best 3 performing subject out of 5 main subject. 5 main subjects. If you are taking English, Hindi, Sanskrit, social science, science and maths, and you are secured 99 marks in Sanskrit. So here also you are supposed to take the 5 main subject. Here either you are supposed to take the Hindi or Sanskrit, any one of them. So CBSE will give the calculator. Automatically you have the Excel sheet where this calculation will be taken up. Right now, today you will find out the CBSE has circulated where they have some problem in class 12th roll number. They are, you can say, matching, you can say, verifying your class 12th roll number with the class 10th roll number. And where they find some problem or some doubt even some doubt also. So in that case, they are clearly speaking that kindly verify whether this roll number of class 10th is okay or not. Because sometimes after 1 year, some other student has changed the name. Some has changed the, you can say, email ID, some father name, some mother name, or some other issue also you can say. So due to this reason, maybe some problem will be there. So here it is clearly saying that your marks, it should be based on the average theory components of the 3 performing subject out of the 5 main subject. Now, whatever the marks secured is there, let us assume it comes 97, 85 or 90, whatever marks. Excuse me, sir. Divide by 3. When you divide it by 3, you will get the mean marks. Whatever the mean marks will be there, you calculate 30% of that. That will be the marks of 30% for all the subjects. Whether you have physics, whether Simi madam, I think you want to say something. Simi Prakash ma'am. So you are supposed to take that 30% marks in the same category in all the subjects. So 30% marks will be the same, whether you have English, physics, chemistry, accountancy, business studies, whatever subject you have. So 30% marks, total same, there is no change. Okay. So every child can calculate how much 30% marks I'm saying. But this 30% marks of only theory subject, theory marks, not the practical. So if it is, you can say it is how English, you have the marks of 100. So here you are supposed to take only the 80% marks. Out of 80, what is the percentage? Let us give in mathematics, you have the practical internal assessment is there. So you are supposed to take only the theory marks of 10th class, best average, and 30% of that marks. Okay, number 1. Number 2, when you are going for class 11th marks, for class 11th, it clearly states that marks based on their theory components of final examination. We assume that as a CBSE, assume that you had completed your all the examination in class 12. So
clearly it says marks based on theory components of final exam. Of final exam basically means you are not supposed to, you can take anything, you can take any portion of that thing. Kali madam, your voice also want to know what will be happen on after some times. उसको भी सुनने दीजिए. So here it is one of the important part कि final marks पे क्यों stress कर रहा है final exam पे. बिकॉज फाइनल एग्जामिनेशन में 11th क्लास का बच्चे का स्कोर हाफ ईयरली के मुकाबले में बेटर होगा. अगर मैं कहूं कि यू आर सपोज टू टेक फ्रॉम द यूनिट टेस्ट पार्ट, हाफ ईयरली पार्ट, ऑटोमेटिकली द रिजल्ट विल गो डाउन. Maximum part when you find out the final examination, total 100% the child try to push that thing. So try to take the final examination, final component, main examination you can say, and out of that you calculate again 30% marks, and that the 30 marks percentage marks of all the subject. English, because 11th and 12th class is a 2-year program. So in 11th class, whatever the subject you have, that subject should be same in class 12th also. If the subject is changed, some different criteria will be there. If some, you can say, stream you had changed, that is a different criteria. But right now, I'm discussing about the same criteria. So here, whatever the marks you had secured in physics, let us assume accountancy. So that marks 30% of that marks. Business studies, 30% of that marks. Economics, 30% of that marks. English, IB, computer science, whatever it is. So 30% marks purely on the final examination conducted by. If you want to take, if you say, sir, in final examination, right now it is not declared by the CBSE. But I hope if the some of the schools will request, it will be done also. If their marks is not so much high in final examination, we want the average marks of whole year. We can calculate anything because 11th marks has not sent to anywhere. So 11th class marks is with the, you can say with the teacher or with the principal or the school document. So school can take any final examination. It is the opportunity. Now about the class 12th examination clearly says marks based on unit test, oblique, midterm test, oblique, pre-board examinations. So here, because in accountancy, business studies, some of the students are serious, but in science, they are not serious about that thing because they are preparing something else. So here in class 12, 40% weightage of all the subject is given only to those person, or only for that thing. Choice to the principal, choice to the committee members to select any one thing, either unit test, either midterm, or the pre-board examination. Out of this, any marks based on this thing, you can calculate 40%. Why this thing has been taken? Because this pandemic, maybe some has taken unit test very good marks, but somebody has taken midterms very good. Sometimes had taken the pre-boards very seriously. So you can take any choice here also. So 40% weightage clearly given to the examination, which is taken by the, you can say school, and you can take any choice. Unit test also, midterm also, but you are supposed to take any one method. Either you select the best out of that, either you select the average out of that, but here it is not mentioning average. It is saying any one of them, unit test, midterm or pre-board. So here as a, you can say committee member have the freedom. It is not clearly mentioned, but it is said the freedom on the behalf of, you can say, school side. So they can take any of that. So total 40, 30, 30, you can say. This is the 40, 30, 30. Now somewhere you can find out how we are going to take the 30% marks. We are supposed to take the opportunity where the 20%, somewhere 20% marks at the practical, somewhere 30 marks is there, somewhere 40 marks is there, somewhere 50 marks is there, and somewhere 70 marks is there. So out of that category of practical examination also, we are supposed to see, we are supposed to convert into the 80 marks. Then you find out the 30% or the 40% of that thing. 11th class, some of the confusion is that, sir, we have the painting, 70 marks is the practical, 30 marks is only the theory examination. How we calculate for the painting? So painting at 30 marks, you convert that 30 marks into the 80 marks, or you convert 50 into 80, or you convert 60 into 80 or 70 into 80, so that you can calculate the actual marks, or you can find out the 30% of directly marks. So 11th class, all the practical examination is totally different. 30,
up, you can find out 70, 50, whatever I'm saying. The percentage you can find out directly. So in this, if the child is not satisfied after this thing also, now they have the privilege. They have the privilege to go to the appear for the re-examination also. Number one. Number two, on the basis of the last 3 year, which is reference year, just like in class 10th also. What is the percentage of your subjective preference reference year percentage, whether it is increased or decreased or whatever it is? On that ground also, you can increase the percentage of at least 5%. In class 10th, it is 2%, but in class 12th, it is approximately 5%. So it can be taken on the basis of that way also, where you can say the subject other than where the subject has been changed. So actually, sorry, as per the rule, basically when you have the change of the subject, you are supposed to take the examination before changing the subject. Let us assume 11th class, in 12th class I am supposed to change some subject. Let us assume I am giving physical education instead of mathematics. So physical education they had not passed in class 11, but while changing the subject, we are supposed to take the examination in class 11th also at the end of the session. But most of the schools are not taking that. Now the CBSE is collecting the data, how many people have selected this thing, and there is some criteria can be find out. Most probably on Thursday, we will get this type of criteria also, and this type of data also. How many students has opted for change of the subject or the direct admission also. In the case of direct admission also, some of the schools change the subject without intervening anything. So that can be considered by the CBSE on the basis of the ground of the type of subject, type of previous performance of the child, or they will take the average basis of the subject. Sometimes you can say thought process will be there. Most probably the main subject is changed with the subordinate subject. You can substitute subject just like physical education or like this. So that type of subject I think they are taken. This is the gist of, you can say, the criteria. And here also, now what the school will do. First of all, school is supposed to make the committee similar to the class 10. 5-member committee with a principal and 5 members, teacher member who are taking the subjects, main subjects, and 2 external also. So 2 external peoples are also there from the other schools. And after these external subjects, that member, with the help of that members, you can coordinate the things in a very well manner. You make the meeting, and now first stage has been covered up, where we find out the changes of roll number from you can say one person to other person, if the roll number has changed or some problem is there. So that type of thing is already sorted out. It can be improved now, and most probably 24th. Today is 22, 24th. All the regional officer has given the message to their schools also. If you have any query like this, to kindly change it and kindly improve it. Now over to you. If you have any query, most welcome, and you can ask one by one. Over to Madan sir, because I had given this gist, and I think this gist is read by all the people. Meenakshi madam has raised the hand first of all. Meenakshi Gupta madam, if it is, I appreciate if you open the video, madam. Yes, sir. Sir, I wanted to find out that if you have 4 students in class 12, for example, can we take for one child, can we take the best, like if he's done well in unit tests, so we can take unit test marks for him, and if a child has done well in the final pre-board exams, we can, like, can we have a different test selection for every child in class 12? It is, I said clearly that in class 11, it clearly states that midterm, half yearly, you can say a final examination. They had said clearly final. For class 12, actually, they are saying this thing. But option you can take right now, because if the result is going to enhance on the benefit ground, if the committee member, all the committee members are agreed, I think you can change it. You take the best one. Instead of taking the average one, you take the best one. It's much better.
No, what I'm asking is that for one child we can take UT, for another child we can take pre-board. That is I said similarly, ma'am, you take the best one. If you are taking one of the best for, you can say unit test, other for the half yearly, it means you are taking the best one. Okay, So thank you. you are taking the best one. So you are supposed to opt for all the children in the similar manner. And the committee members should say this thing ki this thing will be benefited to all the child, automatically you can take this thing. You can take. Okay. Thank you, sir. Yes, ma'am. Yeah, Nilu ma'am. So one second, sir. The same thing what Meenu ma'am had asked. That means for each child, it becomes customized as per the child's performance. Child interest, you can say, madam. Simple, you can say, not customized. It is in the favor of child interest. Yes, sir. Child benefit. You see how we can give the benefit to the children. Yes, sir. So that is the main important part. That will be great, sir. That will be great. Fine, sir. Yeah, fine, sir. Yeah, Disha ma'am. Sir, good evening. Yeah, ma'am. Sir, will there be any variation or any difference in online and offline mode? Like we are to take the offline exams or we are to take the online, or any of them can be taken? Actually, ma'am, being educationists, we are not supposed to make the differences right now. Because if we are taking the online classes, so we are expecting the online examination also. Absolutely, sir. So right now, the assessment policy should be in the different form. Right. Dinesh sir से ये मेरी कई बार discussion भी हुई है कि that is the you can say change of the method. You can say we are supposed to make the change of the another way. एक मिनट ये phone पे बात. So we are supposed to make the differences here. Online or differences में how you are going to make this thing. When you are going to take the online examination should be in that way कि child should read out themselves. They can search it out themselves. It should be case study method. Right. Literature type method. They can search out, no problem. Go to the Google, take 5 days for completing the examination, no problem. But at least you should know what you are writing. So that is the important part basically. So there will be no differences. Right now, the CBSE is also going to create the criteria of the assessment policy very soon, where how you are going to conduct the examination, what type of only the system will be there, that will be discussed. And it will be there. But there should be no differences, ma'am. और अच्छा बच्चा नकल भी कर रहा है ना, तो we can not say कि नकल कर रहा है. नकल हम करने का मौका दे रहे हैं, इसलिए वो नकल कर रहा है. We can say this thing. नकल कर रहा है या तो हमने पेपर इतना आसान बनाया कि that is easily. I'm not saying that easy बनाया. I can say we are not make it research based. So research के अंदर you can find out so many journals. When you are going to create any research paper, write down the research paper. You read out at least 10 to 12 or 15 research paper. You take it something positive in that, and then you make the something reply. That is the good approach, I think. Definitely, sir. Yeah. Thank you so much, sir. Thank Yeah, you so much. madam. Then yes, sir. Yeah, good evening, sir. Yeah, ma'am. Neelu this side. Yeah, Sir, Neelu. sir, if a student has opted for maths in class 11th and she has changed the subject in class 12, now she is having PHE. I said that policy will be coming very soon. Most probably, not still there. Maximum subject change method. The CBSE is collecting the data. How many students had opted for change of the subject? Maximum cases is coming that they had opted mathematics or main subject and they had a change to the physical education or painting or something like this. Or in 10th class, they do not have the dyslexia or some handicap. But in class 12, they had opted for these things also. So CWSN cases and this change of the subject, one new circular will become very soon. Right now, the policy is going to be take on this basis. But if there is change in the subject, we are supposed to calculate on the basis of 12th right now. So अभी तक कोई statement नहीं आया CBSE का, but it will come very soon. It may become. Okay. Answer for class 10 to CBSE will send us the marks, na 30%. 30% they will send you. So we don't have to consider. No, any you are other not subject supposed to from our calculate. side. Very soon you will get the Excel sheet. Most probably after 25th, you will get the sheet. Okay. Because Thank you, 24th, all the CBSEs correlating the data. जो भी 10th का 12th का roll number है, they are correlating. 25th तक I think the task will be completed. 26th or 27th they will issue.
Okay, thank you so much, sir. Yeah, Joshna madam, then Nikita Goel ma'am. Thank you, sir. My question is already being answered. Neelu ma'am asked and you answered it. Thank you so Okay, much. thank you ma'am. Thank you. Yeah, Nikita ma'am. Good evening, sir. Sir, I want to ask, can we take some breakup from class 12th only, some percentage out of 40 only from UTs and some from pre-boards, some from midterm? Yes, yes. In class 12th you can take, but in class 11th it is saying final examination. Yes, yes. Final yes. score. So that So 40 why- can be split up. But I said I just said in final score if the child is not attempted the final score, but you are promoted to the on the basis of half yearly and something. So it is a condition by the, you can say, the committee members, they can take anything in the class 11th also. In class And- 12, sir, we can take the breakup. Yeah, not breakup. You can take anyone. Either you can take the best one, or either you take the anyone. But it should be formulated to all the students in the similar manner. And it आपको cannot be एक ही like some. पॉलिसी अप्लाई करनी है, आपको एक ही पॉलिसी अप्लाई करनी है, या तो बेस्ट लेना है या सभी का एक ही चीज लेना है. और सर सभी के लिए अगर वेटेज ले लेंगे, कुछ वेटेज हम यूनिट टेस्ट की लें और कुछ वेटेज हम नो ऐसा नहीं कुछ नो ऐसा करने के लिए लिखा नहीं है, और इसमें करने पे इट विल क्रिएट प्रॉब्लम. ये जो वेटेज का सिस्टम था 10th क्लास का, इसीलिए आज तक प्रॉब्लम चल रही है. वो उसके अंदर कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत आती है. तो यहाँ पे वेटेज इज नॉट गिवन. ओके सर, थैंक यू. ओके मैम. Sir, इसमें I'm seeing here in chat, there have been a number of queries regarding same one. That is, if the child has qualified class 10 from different board, right? As I was saying here, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा. आज एक्चुअली इनका जो पोर्टल है वो इनका ओपन हो चुका है, and what you have to do is you have to verify class 10th enrollment here. So उसमें आप वो सारे बच्चे जिनका की CBSE फैच नहीं कर पाई है, उनका रिकॉर्ड आपको वहां पर विजिबल होगा. और वहां पर उसका क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ वन चाइल्ड इज फ्रॉम NIOS, राइट, या फ्रॉम एनी अदर बोर्ड और फ्रॉम एनी अदर मे बी ICSE या किसी भी बोर्ड से है वो, तो उस केस में वहां पर वो आपको विजिबल होगा. जैसे आज मैं खुद ट्राई कर रहा था तो मैंने देखा उसमें कि देयर वर 4 स्टूडेंट्स जो कि उस रिकॉर्ड में नहीं पाए गए. यानी कि बेसिकली क्या है कि यूजुअली होता है कि जो 10th से आया है 11th में, 11th से आया 12th में, यानी कि वो हमारा अपना बच्चा है, अपने ही स्कूल का बच्चा है, तो उसका रिकॉर्ड तो मैच हो गया. लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि किसी दूसरे स्कूल से आए या किसी दूसरे बोर्ड से आए, फॉर एग्जांपल कोई बिहार बोर्ड से है या कोई उड़ीसा से है, राइट, या कोई ICSE से है या कोई यूपी बोर्ड से है. तो वहां पर वो दिखाई दे रहा था कि ये 4 बच्चे हैं जो डिफरेंट बोर्ड से हैं. तो वहां पर वो एडिटिंग का वो मांग रहा है आपसे वो, तो वहां पर आपने एडिटिंग करनी है और उसमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, आइदर नो चेंज और एडिटिंग, राइट. एडिट में आपने जो भी एडिटिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल उसका जो 10th का रोल नंबर है वहां पर वो एडिट करेगा और वो डाटा अपने आप फेच करेंगे. वो वहां पर आपने नहीं डालना, दे वुड फेच देमसेल्फ. सर ऐसा ही है ना मिश्रा तो सर? आपने सही कहा. अगर समाधान सर ने बिल्कुल ठीक कहा. लेट अस अज्यूम कि CB मिश्रा वहां पर एक नाम आया और वहां पे ऑप्शन डाला कि एडिट और अपडेट करने के लिए. एडिट एंड अपडेट 2 चीजें हैं, या नो चेंज, नहीं, 3 है सर, एडिट 3 और है नो वहां पर. चेंज. जी, और उसके अंदर 2 ऑप्शन वो पूछता है कि आपका 10th क्लास का रोल नंबर क्या है. एक तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, अगर रोल नंबर ठीक नहीं है तो उसको ठीक डाल सकते हैं. दूसरा वो बोर्ड पूछता है, वो बोर्ड का ऑप्शन सारे जितने भी बोर्ड्स हैं उसके नाम पूछता है. NIOS है या आपका हरियाणा बोर्ड है या यूपी बोर्ड है, कर्नाटका बोर्ड है, जो भी बोर्ड है आपका, यू कैन मेंशन दैट बोर्ड. तो ऑटोमेटिकली दैट बोर्ड विल बी एक्नॉलेज्ड. वो रोल नंबर के बेसिस पे वो उस बोर्ड से डाटा उठा लेगा वो सॉफ्टवेयर, और उस डाटा के आपके मार्क्स को उसी बेसिस पे ले लेगा. अब वो कैलकुलेशन के बेसिस पे कई जगह थोड़ा सा ये आएगा कि दूसरे बोर्ड के बेसिस में जहां प्रैक्टिकल और थ्योरी का डिफरेंसेस होंगे, उसके ऊपर वो डाटा जब मैच करेगा तो वो मैक्सिमम पार्ट थ्योरी का ही लेके चलेगा. प्रैक्टिकल सपोज करिए साइंस के अंदर आपका प्रैक्टिकल लेट अस अज्यूम कि NIOS में नहीं हुआ, 100 मार्क्स का ही आपका पेपर हुआ, तो वो 100 मार्क्स को ही आपके 30% में कन्वर्ट करेगा. वो थ्योरी को लेके चल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा. बिल्कुल. अच्छा, और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, बेसिकली जो 30% को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है. 30% क्या है? क्योंकि आप ये देखेंगे, क्योंकि हम वी बीइंग अ पर्सन ऑफ कॉमर्स, आपने एक बात सुनी होगी, जो देखते हैं ना कि वो डिस्काउंट 20 + 10 + 5,
तो 20 + 10 + 5 35 हो गया, तो 35 करेंगे और 20 के बाद 10 करेंगे और 5 करेंगे तो शायद आंसर डिफरेंट होगा, राइट? आपने देखा होगा बहुत जगह सेल पर लिखा होता है 50 + 40 + 10, राइट? तो यानी कि 50 + 40 + 10 यानी कि 100% हो गया, तो यानी कि फ्री में हो गया वो सामान, तो फ्री में तो नहीं होता वो, राइट? सेम चीज यहाँ पे जो 30% है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगा, वैसे सर ने बहुत अच्छे से उसको किया है। सपोज करो एक बच्चे के 80 on 80 आए हैं, 80 on 80 आए हैं, 80 का 30% यानी कि 24, तो आपने क्या करना है, वो 24 के हिसाब से टेबल बनेगी, यानी कि इसके मार्क्स इसने में से इतने, तो 24 में से कितने। आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट इट। Here in class 10, total mean of best 3 subject का mean, let us assume, और वो भी main subject best 5 में से main subject का mean उसका 30%, class 12th 11th का 30% of the subject जो final theory का score, same 40%। बिल्कुल मदान सर ने कहा, that is the very true कि when you are going to calculate that will be different। So here let us assume I said English, Hindi, science, social science and mathematics subject you have, but you have also French with you. Now here what subject you will take? French, let us assume you have scored very well marks in French, but maths you had secured less marks. So only the 2 languages you will consider, either English, French or any one other subject, जो भी आपका होगा, जिसमें भी best marks you will secure. So best 3%, जिसका भी best 3 marks highest marks होगा theory के अंदर, that will be calculated, उसका mean लिया जाएगा। Let us assume English, maths और social science का total 80 बन जाता है, 240 हो गया, 240 divided by 3, 80 आ गया, 80 का 30%, that will marks will be allotted to all the subject, whether you have in class 12th accountancy, physics, chemistry, whatever subject. So 10th class marks will be same for 12th class also, 30%. But in 11th and 12th class, it changed, because in 11th and 12th class, we assume that the subject of the curriculum of the 2-year program, as per the scheme of examination of CBSE, it is a 2-year passing subject. So for that, you are supposed to calculate 40% of the final score in 11th class, what the circular says, and 12th class ka you are supposed to take, you can say midterm or half yearly or the pre-board, whatever it is. So you can take any option, best of that. Okay. So 40%. Sorry, गलत बोल गए। 11th में 30% and then 40% in class 12. बिल्कुल 30%. 10th and अब जैसे for example, यदि and 40% in 12th class. Yes, exactly. If we talk about like, there are the combination of subject. Like for example, if we talk about accountancy, main study, so 80 + 20 का है. लेकिन यदि हम physics की बात करें, chemistry की भी बात करें, तो वहाँ पे 70 and 30 का combination है. तो वहाँ पर जो हमारा formula लगेगा वो 70 का 30% यानी कि 21. राइट, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल सही जी। आई थिंक सर एक वो जो सर्कुलर आया है उसको हम जरा दिखा दें तो दैट वुड बी बेटर। मैंने आपको, आप दिखा रहे हैं सर, मैं दिखाऊं क्या? आप देख लीजिए सर, मैंने डाउनलोड नहीं किया अभी। ओके फाइन, जी प्लीज। A query meanwhile, sir, can I ask a query? Yeah, ma'am. Kavita ma'am. Good evening, sir. Good evening, Mishra sir also. Sir, you just told us that for class 12, 40% weightage, we can allot best of, we can take either periodic test or half yearlies or main exams, that is the pre-boards which were conducted. But the rationale document in Annexure 2 of the same circular says that result committee may assign relative weightage to various exams. That is serial number 1 and 2, and in 1 it is mentioning unit tests and half yearlies, and in second serial number it is mentioning pre-boards. So it seems to be a bit contradiction. Could you please clarify on the same? Actually, ma'am, it says ki, for class 11th final result, final examination, in class 12 it is the choice of highest score marks, you can say. Best out of that, you can say where the child has secured best marks. As you cannot supposed to take the 30% of half yearly, 20% of unit test like this. You are supposed to opt only the one formula, best, whatever the marks has been secured, that you are supposed to convert into the subject weightage basically. Let us just like you can say 70 marks in physics, but in accountancy it is 80 marks. So you are supposed to convert into that thing, and you are supposed to take that. Number two,
as per the choice of the committee members also, in 11th class also, they can make the choice also changing the, you can say, final examination. Let us assume the final examination child is not able to attend the paper. It doesn't mean he will not secure any marks. He will not get 30%. In that case also, we can take the advantage, and the committee member will recommend that we are taking the unit test examination or other subjects, so we can take it. So I think you mean to say that for class 12, instead of taking weightage for any particular exam, we should just check out periodic test, half yearly and pre-board, and whichever score is the highest, we can take that for 40%, allotting that 40% score to the child. Yes, yes. Okay, thank you so much, sir. And it can be different for every child. Yes, sir. It can be different for every child. Means this is a question what I want to ask. Yes. Don't say different for every child, then it makes confusion. You say best score secured by Whatever the is Secured by, yes, If we yes. make it as best of PT or half yearly or pre-board, then obviously it becomes the same policy, but marks awarded will definitely be different for every child. Yes. different. Yes. हाँ, इसमें सर एक टेबल है, उसमें जो आया है वहां से, और बहुत अच्छा है वो जो पीपीटी उन्होंने भेजी है. So I think we can share that PPT here. That would be more clear. Just a minute, sir. So one more point, if you allow me to ask, Yeah, ma'am. that relates to absentee children also, absentees of exams. It says that, circular says that we should take reference from class 10th result, 11th result and 12th result to allot marks to students who have not appeared for any of the exams. But in case we are taking the policy that you are just saying that best of PT or half yearly or pre-board, then I think most of the students will already be covered in that. Yes, they had to get it covered. Actually, it can be done in that way. आप ये देखो ना, that circular clearly say that is the totally child interest, you can say. Total complete in the child interest. तो उसमें आप चिंता ना करें. वो absentee students का कहीं ना कहीं some examination will be there. Cannot say उसमें कोई एग्जामिनेशन दिया ही नहीं होगा. Some examination will be there definitely. बिल्कुल सर. Yes sir, thank you. जी सर, ये सर मैंने खोल दिया ये. जी सर. जी. इसके और नीचे एक बार नीचे ले लीजिए सर. ये जो सर बार-बार बोल रहे हैं इसी बात को, एलिमेंट 1 द रिजल्ट ऑफ यूनिट टेस्ट, मिड टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय स्कूल, एंड फॉर क्लास 11 द रिजल्ट ऑफ द फाइनल एग्जाम्स. And for class 10th, average of best 3 subjects out of the main 5 subjects. जी, ये ऑलरेडी स्कूल ने अपलोड कर दिए इंटरनल प्रैक्टिकल एंड इंटरनल असेसमेंट मार्क्स, and that date is 30th June basically. Before that you are supposed to upload the marks of practical and internal assessment. वो पोर्टल जो है वो आप बहुत ही सेल्फ जो है उसमें एक्सप्लेनेशन है जो आज पोर्टल इनका लॉन्च हुआ है, तो उसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी. उसमें मार्क्स जो है मैं बता दूं आपको, बेसिकली एक तो जो इंटरनल असेसमेंट है जो आप फिजिकल एजुकेशन, जनरल स्टडीज एंड वर्क एक्स के जो डालते हैं वो ऑलरेडी उसके अंदर नजर आएगा आपको. दूसरा जो आपके बोर्ड के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो 30 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, वो भी ऑलरेडी उसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा. ऐसा ही होगा ना सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर? इसमें आपका जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है सर, दैट विल बी शोन. नेक्स्ट आपका जो ग्रेडिंग है जिसमें आप फिजिकल एजुकेशन, पीएचडी, वही मैं बात कर रहा हूँ, उसका अलग देंगे. हाँ, जी. उसके बाद जो ये मार्क्स है ये आपको 10th क्लास का ऑटोमेटिकली दे विल गेट द चार्ट. And then afterwards there will be a column where you are supposed to fill the marks for 11th and 12th class. 10th class की तो calculation they will do 30% का. यहाँ पर ये bifurcation दे रहा है. In 12th class and 11th class basically we have the subject where we have the internal assessment of 20 marks, 30 marks, 40 marks, 50 marks and 70 marks. 70 marks is the painting, you can say, IT you can say 50 marks, like 40 and 30. Painting है, music है. म्यूजिक है. Yes, so I think fashion designing also. Yes. तो बाइफिकेशन जो है इसमें 80 मार्क्स का ही आपको 40% या 30%, 11th क्लास का 30%, 80 मार्क्स का 40% इन 12th क्लास एंड 30% इन 11th क्लास. सिमिलरली 70 मार्क्स का अगर थ्योरी है तो देयर आल्सो 40 एंड 30% मार्क्स. ये 70 को 80 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको. यू फाइंड आउट डायरेक्टली 40% फॉर 12th क्लास and 30% for 10th class. ये वाला जो percentage है, that you are supposed to fill in the data. That will be provided Excel sheet.
And one more thing, sir, excuse me. Yeah, ma'am. Sir, suppose if we have taken half yearly for less marks, say 60 marks, then we need to change it to 80 marks and then get the Of course, percentage. you have to convert it. You Okay, can fine. convert 60% of the 40% or 30%, or you convert 60 to 80, then 40 and 30, it will be same. So it will be same. Thank you. Sir, could I please ask a question? Yeah, please, ma'am. Sir, namaste, sir. My question is like one of our students is from a different board, obviously from Telangana board, sir. I'm from Hyderabad. So the point is that it is only the grades that have been mentioned in the certificate, the 10th certificate that the boy has produced when he joined the school. I just wanted to know, how do we go about calculating the 30%, sir? Thank you, sir. But Sandhya ma'am, actually for the other boards also, CBSE is now collecting, as Madan sir also explained. Right now CBSE is open. Today the CBSE is open the data where 12th class, they have not passed the 10th class from the CBSE. And they are collecting the data from the students, from the schools who had not passed the from the same board basically. So when you put the data there, they will definitely collect the data also from the particular board and they will calculate accordingly. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Sir, may I know where exactly can we find this, sir, or will it take some time? It will take some time after 24 because RO regional offices are collecting this data 12-24. Most probably, I hope it will be coming on 26th, I think. Okay, sir. Thank you, sir. You just see this table is, sir, this table is very important. The most important is this table basically. Yes. आज के हमारे पूरी जो सेशन है उसका जो सारा क्रंच है वो ये टेबल है. इसको आप प्लीज बहुत ध्यान से देख लीजिएगा. जैसे कि मैंने कहा कि 80 और 24 यानी कि 80 का 30% 24, तो 24 में कन्वर्जन करना है हम लोग इसको बेसिकली. और जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे के मार्क्स जो आए हैं वो सपोज कर आए हैं 50 आउट ऑफ 80. ध्यान से सुनिए, यदि उस बच्चे के मार्क्स हैं 50 आउट ऑफ 80, तो हमने 50 का 30% करेंगे तो 15 आएगा. कैसे करेंगे इसको? मिश्रा जी प्लीज, इस ये टेबल जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल बेसिकली. सारा हमारा जो बेस है वो ये टेबल पर है. यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पर जो 10th क्लास का मार्क्स आपको बताया जा रहा है, that basically for the 10th class marks they are assuming that if the average score of 80, 70, 60 or 50 or 30, that is the best you can say mean score of you can say secured. यहाँ 80, 70, 60, 50, 30 जो है वो एक सब्जेक्ट को लेके चल रहा है कि अगर बच्चे ने 80 मार्क्स बेस्ट 3 सब्जेक्ट में एलोकेशन है उसकी, बेस्ट 3 सब्जेक्ट में स्कोर किया सॉरी, तो उसका 24, अगर 70 स्कोर कर रहा है तो 21, लाइक दिस इट विल बी सिक्योर. इन क्लास 11 इट विल बी सब्जेक्टिव बेस्ड. ये थ्योरी के मार्क्स के अंदर ये सब्जेक्टिव बेस्ड हो जाएगा उसका. तो अगर 80 में से उसको 24 मिल रहा है और दूसरे 11th में भी 24 मिल रहा है और उसका 32 40 में बनता है और प्रैक्टिकल में 20 बनता है, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी गोइंग टू द कैलकुलेशन ऑफ द ऑल द सम ऑफ दिस थिंग्स. सो यहाँ पर देखिए आप 10th में 24 प्लस 24 11th का और उसका 12th का जो टोटल मार्क्स बनता है वो 52 बन जाता है टोटल. तो 52 मिला के टोटल मार्क्स उसका आ जाएगा. यहाँ पर ये चार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि 10th क्लास का इसने ना अलग अलग दिया 24, 21, 18, 15 और 9. ये 24, 21, 18 इस मार्क्स का स्कोर का परसेंटेज जरूर निकाला 30, लेकिन यहाँ पर मीन नहीं लिखा इसने कहीं पर. 10th क्लास के एक्चुअली मिश्रा जी मैं बताऊं बेसिकली क्या है, 10th में ये जो उन्होंने 80 और 70, 60, 50, 30 जो लिखा है, ये 10th के लिए 70, 60, 50, 30 अलाउ नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है. एप्लीकेबल है केवल 80, क्योंकि 10th में जो है वो 80 प्लस 20 होता है, लेकिन 11th एंड 12th में ये 70, 60, 50, 30 एप्लीकेबल होगा. म्यूजिक डांस का चेंज होता है सर, म्यूजिक डांस का बिल्कुल चेंज. 10th में आई एम नॉट अवेयर ऑफ. मदान सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, सॉरी. आप जो कह रहे हैं म्यूजिक डांस का, आप पहली वाली स्लाइड पे थोड़ा सा ऊपर जाइए सर, ऊपर जाइए सर, जहाँ पे 30% वाली बात लिखी थी. आप एक मिनट यही रुकिए. आप इस पे 10th क्लास पर बड़े ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है. मार्क्स बेस्ड ऑन एवरेज थ्योरी कंपोनेंट्स ऑफ बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट आउट ऑफ 5 मेन सब्जेक्ट.
5 मेन सब्जेक्ट के बेस्ट 3 सब्जेक्ट का थ्योरी सब्जेक्ट का टोटल जो मीन निकलेगा उसका 30%। लेट अस अस्यूम, मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक बच्चे ने लिया इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस और पेंटिंग या म्यूजिक। अब यहाँ पर क्या है, वो 2 लैंग्वेज में से, अब उसके इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आए, सपोज करिए उसके इंग्लिश में से मैं 100 में से ही मान के चल रहा हूँ कि थ्योरी सारा 100 में से था, लेट अस अज्यूम कि 100 ही है सारा थ्योरी, तो सपोज करो उसके 90 मार्क्स इंग्लिश में आए थे, सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा। उसके बाद सोशल साइंस में उसके मार्क्स आए 80 और बाकी सारे सब्जेक्ट में उसके 70 या उससे बिलो हैं। तो सपोज करो 70 उसके मार्क्स आए आपके सोशल साइंस में, तो हमें 90 + 80 + 70 को ऐड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 3। जो मार्क्स आएगा उसका 30% मार्क्स सभी के ऊपर सब्जेक्ट के 12th क्लास में ऐड ऑन हो जाएगा। अब आप नीचे आइए सर। नहीं, ये उस केस में है जब उसको आउट ऑफ 100 ले रहे हैं, यदि आउट ऑफ 80 लेना है सर, मैंने थ्योरी कहा ना, मैंने ये कहा सर अगर सपोज करिए सारा 100 की है, एग्जैक्टली, मैं सारा कुछ 100 मान के चला। हाँ। अगर 100 का नहीं है तो थ्योरी को हमें परसेंटेज में, वर्ड्स में उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब सपोज करिए आपका मैथ्स का भी आईए मार्क्स जा रहा है आजकल 10th क्लास में, तो यहाँ पे विदाउट थ्योरी का, सिर्फ थ्योरी का जो है कंपोनेंट लिया जाएगा और इक्वल मार्क्स पे लेके उस पर 30% किया जाएगा। एक इसमें ना एक वीडियो भी आई थी, अगर सर की, संयम भारद्वाज सर की वीडियो भी थी, एक मिनट देना बिल्कुल मुझे मोबाइल। Yes, sir. That was very useful actually. वेरी यूजफुल। हाँ, वो मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था सर ने जी। उसके अंदर अगर आप चार्ट को ध्यान दें, अगर सर आपके पास वीडियो है, मैं आपको शेयर करूं मदान सर, तो आप वीडियो को चलाइएगा, मैं अभी शेयर कर रहा हूं उस वीडियो को आपको। होगी, किसी ना किसी के पास जरूर होगी, आप प्लीज चैट में डाल दीजिए प्लीज। Madan sir. जी। Madan sir, just want to know, sir said 10th marks will come from the board. So will it full marks there, sir, or will it come with a 30% criteria? 30 के हिसाब से कैलकुलेटेड होंगे, जहां तक 10th क्लास 30% में ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड, ऑलरेडी कैलकुलेटेड मिलेगा, हमें करने की जरूरत नहीं है उस केस में। We don't touch 10th marks at all, only 11th. Yes. Not required. Madan sir, I need to ask something. Sir, 11th ka when we have to take 30%, do we have to keep in decimals or we have to round off the marks? Round off, ma'am. 11th marks when we round off, or we have to keep in decimals? नहीं ma'am. We need to round off once only when we are taking out of 80, or we need to round off every time, like 30% when we are taking off 11th, then 12th when we are taking 40%. नहीं, जैसे अभी यहाँ पे ये टेबल दे रखी है 30, 30, 40, राइट? तो यहाँ पर ही हम इसको राउंड ऑफ लेते हुए चलेंगे, हम हर बार राउंड ऑफ लेते चलेंगे। I think at every level it should be rounded off, otherwise it will be difficult. Exactly. There's no clarity regarding this given in the circular. There's nothing specifically given in the circular regarding this. No. In any case, we'll have to abide by the reference here. वैसे भी मैम, वैसे भी जो हमारे पास जो मार्क्स आएंगे वो तो वैसे भी जो है वो डेसिमल में तो नहीं होते, it is always in round. But when we are converting, we are taking percentage, it will be coming in decimal and we have to round off at every step. Exactly. Okay sir, okay, thank you. जी। The answer I've shared the video on your personal chart. आपने कर दिया? Okay, मैम इसी में डाल दो ना प्लीज। Shared it. मैम इसी में कर दो ना, इसी में, एक मिनट। सर उस वीडियो को अगर आप चलाएंगे, it clearly indicates, एक मिनट, अगर वो वीडियो अगर चैट बॉक्स में है, चला दिया सर, मैंने चला दिया। अब उसको वीडियो को देखिए प्लीज। It clearly indicates about the 30% जो marks है। 10th class का you are not supposed to calculate anything. Leave it to the board. CBSE will provide the Excel sheet. नहीं भरा ना? That happens, baby. ये क्या? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ illogical thoughts ആണ് കൂടുതൽ advertisement skip. सीबीएसई के 12वीं के नतीजे कैसे आएंगे? अब इसके लिए ऑब्जेक्टिव जो क्राइटेरिया डिसाइड होना था वो हो चुका है। कल सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई ने इस बारे में बताया है। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी, 30, 30 और 40
10th 11th और 12th, जो भी ये 30 के criteria बाद है, रोकिएगा एक बार। अगर मेरे एक रिपोर्ट कार्ड बनानी हो, सपोज मेरे 10th में इस तरह से मार्क्स आए हैं, तो किस तरह से बनाएंगे, अगर आप बता सके हमें। जी बिल्कुल सरोज जी, देखिए मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझको लगा कि जब आपसे बात हो रही थी कि बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, उनको अपना रिपोर्ट कार्ड खुद तैयार कर लेना चाहिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन की है। केवल इस कैलकुलेशन में अंतर इतना है कि बच्चों के सबके मार्क्स मैंने आउट ऑफ 80 दिखाए हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ के 80 की जगह 70 हो, कहीं 50 हो, क्योंकि वो हमारे सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स अलग अलग होते हैं। तो ऐसे केसेस में पहले उनको 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर वापस लेकर आना पड़ेगा, केवल इतना अंतर होगा। बाकी जो हमारी मोटी मोटी कैलकुलेशन होगी, Madan sir, I want to speak something. Can I मान लीजिए speak अगर it हम out? क्लास 10th में देखते हैं तो क्लास 10th में हमारे मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट के 80 हैं और कंपोनेंट जो हमको लेना है 12th में वो 30% लेना है। यहाँ सब्जेक्ट 1 में बच्चे को 70 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 80, सेकंड में 65, यहाँ थर्ड में 80 मिले हैं पूरे, 4 में 60 मिले हैं और 65 मिले हैं। तो हमारा 70, 80 और 65 ये तीनों बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो ये 215 हो गया, हमने इसको डिवाइड किया 3 से, 71.66 हमारा मीन आ गया। अब इस मीन का हमको क्या करना है, 30% लेना है। तो 30% of this mean is equal to 21.5. This red color is showing to the class 10th basically. तो ये 21.5 as it is हम लेंगे और इस 21.5 को क्लास 12 की मार्कशीट में हम हर सब्जेक्ट में 21.5, 21.5, 21.5 दिखा देंगे। ये अच्छा, तो यानी 10th क्लास में बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स आपको लेना है। बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट, उनको आप ऐड करें, डिवाइडेड बाय 3 करें, मीन निकालें और फिर वो आपके हर सब्जेक्ट का मार्क्स आ जाएगा। ठीक है सर मदान तो सर, ये एक बार रुकिएगा सर मदान सर, यहाँ पे देखिए क्लियर सर ने एक्सप्लेन किया, जिसमें आपको 80 मार्क्स को कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं और 80 के ऊपर उन्होंने सारे सब्जेक्ट का कैलकुलेशन किया, बेस्ट 3 का उठाया उन्होंने बाई 3 किया और 30% लेके उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, वो 0.5 का एज इट इज। Yes, sir. I need to confirm this point. This is 0.5 only, na? It will be not converted right now. You are not. Yes, it will be converted at the time when full marks are there. Yes. Out of 80. Yes. Number 1. Number 2. Best 3 subjects. Best 3 subjects. Either you convert into the 8, जो वो 80 है या बेस्ट, लेकिन उसने मेन सब्जेक्ट जरूर कहा है, तो बेस्ट 3 के अंदर जो कह रहा है मेन सब्जेक्ट, ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के अंदर और आ जाएगा कि आपका पेंटिंग भी कईयों का मेन हो सकता है। दूसरा सब्जेक्ट सोशल साइंस की जगह अगर उसने CWSN केस हुआ होगा, हो सकता है उसने सोशल साइंस या साइंस छोड़ा हो, मैथ्स नहीं लिया हो, तो वहां पर भी ऐसे सब्जेक्ट्स आएंगे। अब आगे चलाइए सर। हाँ, लेकिन सर ये जो बात कर रहे हैं, ये मार्क्स तो CBSE हमें कन्वर्ट करके दे रहा है। ये आपका बिल्कुल 10th क्लास का 21.5 जो इसमें बच्चों को दिखा रहे हैं, ये पूरा का पूरा CBSE देगा। 10th का जो परसेंटेज आएगा, यहाँ तक हमने मार्क्स देने हैं 70 में से, 30 वाला CBSE खुद देंगे, 24 सॉरी, हम देंगे 56 में से। अगर 10th का कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, वो एक्सेल शीट में आपको अपने आप कैलकुलेटेड मिलेगी, इसलिए आप वो एवरेज और मार्क्स से भूल जाइए। That's very right, sir. But after including 10th class marks in 11th and 12th, in total we'll have to see that the moderation is done so that overall average is matched. Moderation. Yes, Moderation can be done at the last level. Yes. Now listen the video carefully for class 11th now. Sir, 11th class now. 20% जो बोला गया है वेटेज आने का, वो ये 12th की मार्कशीट दिख रही है आपकी। इसी तरह से 11वीं इसके बाद हम 11वीं क्लास के लिए जाते हैं। 11वीं क्लास में भी हमारा मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट का 80 है, 30% कंपोनेंट हमको लेना है। ये सब्जेक्ट हमने शो किए हैं 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स हम लेते हैं। यहाँ इसको 50, 75, 55, 65, 75 मार्क्स मिले हैं। तब हम इसको क्या कर रहे हैं, क्योंकि 11th में सब्जेक्ट वाइज लेना है, तो हमने 50 का 30% लिया 15, 75 का 30% लिया 22.5, फिर 55 का 30% 16.5 और फिर 65 का 30% 19.5, 75 का 30% 22.5। ये हमारा 30% हर सब्जेक्ट का आ गया। यहाँ हमने हर सब्जेक्ट का क्यों लिया है, क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे कॉमन होते हैं। अगर मेरे पास वहाँ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन 11th में है, तो यही सब्जेक्ट मेरे 12th में भी होंगे। 2 इयर्स का कोर्स है ये।
तो उस कंडीशन में हमने हर सब्जेक्ट के 30% मार्क्स यहाँ निकाले और इन 30% मार्क्स को 12th की मार्कशीट में हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। ये जो ब्लू कलर है हमने क्लास 11th के लिए दिखाया है। ये सारे मार्क्स हमारे ये आ जाते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे एक इशू आ गया। यहाँ पे इशू ये आया कि इन्होंने लिया है मैक्सिमम मार्क्स 80, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट में 80 ही हो मैक्सिमम मार्क्स, हो सकता है 70 हो। सर 70 हो, 50 हो, 40 हो, उसका 30% लेके यहाँ पे हमने 12th का 11th का लेना है। 11th का जो भी उसका थ्योरी का सब्जेक्ट का जितना भी हो, जैसा आपने चार्ट जो शो किया था उसके अंदर 80 मार्क्स, 70 मार्क्स, 60 मार्क्स और 50 मार्क्स, ठीक है सर, और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 70 मार्क्स का आपका ये प्रैक्टिकल हो जाता है इसमें आपका म्यूजिक में और पेंटिंग में। तो हेयर यहाँ पर 10th और 11th में फर्क क्या है? 10th क्लास में हम मीन का 30% ले रहे थे, बेस्ट 3 को सिलेक्ट कर रहे थे, उसका मीन निकालते थे, फिर 30% लेते थे। बट इन क्लास 11th वी आर सपोज टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल सब्जेक्ट। टोटल सब्जेक्ट मीन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। इंग्लिश में वी आर सपोज टू टेक सेपरेटली, फिजिक्स में वी आर सपोज टू टेक सेपरेटली। तो हेयर वी आर सपोज टू कैलकुलेट व्हाट द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द चाइल्ड एंड इन थ्योरी सब्जेक्ट, उसका 30%। अब सर 12th क्लास की आ जाइए। अब सर इसमें एक चीज ये क्लियर हो गई, जैसे कि अभी एक मैम ने पूछा था कि हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो इससे ये बात पता लगी कि नहीं, राउंड ऑफ हमने लास्ट में ही करना है, पहले नहीं करना। लास्ट में राउंड ऑफ होगा, लास्ट में मॉडरेशन के अंदर होगा, ये 0.5, 0.8, 0.2 ये सब लास्ट में होगा। लास्ट में होगा, चलिए ग्रेट। सर अगर 11th में किसी का रीटेस्ट आया हुआ हो और उसके रीटेस्ट के बाद के मार्क्स लेने होंगे, वेटेज मिलेगा। 11th के रीटेस्ट के मार्क्स ही बात के ले होंगे मैडम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है सर, कुछ इस तरह से दिखेगी, जो ब्लू है उसमें 11th में मार्क्स 20% वेटेज दिया गया। अभी हम लोग क्वेश्चन बाद में कर लें। हेलो, मेरी रिक्वेस्ट है, पहले हम इसको पूरा देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन कर लेंगे। दैट्स बी बेटर, प्लीज। इसके बाद 12th। अब हमारा 12th आता है। 12th में हमारे स्कूल जो हैं वो यूनिट टेस्ट करते हैं, मिड टर्म एग्जाम करते हैं और उसके बाद प्री बोर्ड एग्जाम करते हैं। तो यहाँ रिजल्ट कमेटी ने कुछ डिसाइड किया। उन्होंने या तो ये लिया कि तीनों एग्जाम से मीन उठा लिया, या 2 एग्जाम से मीन उठा लिया, किसी 2 एग्जाम से, या किसी एक एग्जाम को वेटेज दे दी, और उसके हिसाब से उन्होंने मार्क्स कर जो हैं वो सब्जेक्ट 1 में 55, सब्जेक्ट 2 में 80 में से ही चल रहे हैं। सब्जेक्ट 3 में 63, लास्ट में 80 और 5 में 76 रख दिए। अब हमको यहाँ पर क्योंकि इसका 40% वेटेज लेना है, तब हमने ये 40% वेटेज दिया। 40% ऑफ 55 इज इक्वल टू 22, 77 का 40% 30.5 एंड 63 का 25.2, 80 का 32, 76 का 30.4। अब ये जो ग्रीन मार्क्स है ये हमारे क्लास 12th के हैं और ये मार्क्स उठाकर हम इनको यहाँ पर रख देते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट हमारे आगे देखिए, सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5 12th के, और हमने इसको लेने के बाद क्या किया, ये 10th के रखे हैं, ये 11th के रखे हैं, ये 12th के रखे हैं। इन सबको हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद ये हमारे कितने आ जाते हैं, 58.5, 74.8, 63.2, 73.1 और 74.5। क्योंकि ये हमारे कंप्लीट फिगर्स नहीं हैं, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में करते हैं। 0.5 और उससे जब ज़्यादा है तब उनको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये 59, 75, 73, 75 हो जाता है। अब उसके बाद ये इंटरनल असेसमेंट है जो स्कूल ने अपने आप किया है, ये 20 मार्क्स से हमने लिया है क्योंकि 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। तो उसमें से 19, 18, 20, 18, 19 ये हैं, तो टोटल मार्क्स बच्चे के कितने आ जाते हैं, 439 मार्क्स आ जाते हैं आउट ऑफ 500। लेकिन अब इसमें हमने जो रिजल्ट कमेटी उसको ये अधिकार दिया है कि 11th में किसी वजह से बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मैडम काइंडली म्यूट तो यहाँ पर, या 12th में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर वो मॉडरेट कर सकती है। और मॉडरेट किस हिसाब से कर सकती है, जो जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है उस स्कूल के अगर हम पिछले 3 साल के रिजल्ट देखें, उसमें जो बेस्ट रिजल्ट है उस रिजल्ट को हमने रेफरेंस ईयर कंसीडर किया है। तो उस के मार्क्स में जो उसके सब्जेक्ट के मीन मार्क्स आ रहे हैं हर सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, उसमें ±5 मार्क्स को ऐड या डिलीट किया जा सकता है और बच्चों को एक क्रम में हम लगा सकते हैं वो मार्क्स देने के बाद। तो होगा क्या कि जो भी बच्चा है उसके ये जो 439 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, ये 439 से जब वो मॉडरेशन होगा
बच्चों को रीअरेंज किया जाएगा एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये मार्क्स फिर एनहेंस हो जाएंगे और ये टीचर्स की जिम्मेदारी होगी, वो जो रिजल्ट कमेटी है, कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स बच्चे को वो देकर उस पूरी क्लास को रीअलाइन करती है। तो वो रेफरेंस ईयर एक निकालना होगा, रीअलाइनमेंट जिसको आप मॉडरेशन भी कहते हैं, जो पहले भी होता था। वो मॉडरेशन जो पहले होता था वो अलग है, यहाँ बच्चों को करने के लिए है, ये केवल बच्चों को ऊपर नीचे करने के लिए, क्योंकि केवल वो मॉडरेशन है जो मॉडरेशन हम लोग करते हैं वो पेपर 2 से ज़्यादा पेपर जब हम लगाते हैं, 1 से ज़्यादा पेपर लगाते हैं, उनकी डिफिकल्टी लेवल को एट पार करने के लिए हम करते हैं। यहाँ पे हम जो कर रहे हैं ये मॉडरेशन वो मॉडरेशन है जहाँ हम 2 बच्चों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो वो मार्क्स जो 5 नंबर हमने एडिशनल दिए हैं पर सब्जेक्ट, उसमें बच्चे को वो ऊपर नीचे कर सकते हैं और मार्क्स को देने के बाद। सर बंद कर दीजिए वीडियो, थैंक यू। Now this clearly indicates now for 11th and 12th class, it clearly shows that 11th class में 30% and 12th class में you are supposed to take the subjective of 40%. So it clearly says that you can take the best option, you can take the final option also, or if the examination has not given by any child, maybe you can take right now and give that marks also on the basis of pre-board, just like in class 10th. वो एक circulation में आ जाएगा। Now over to you, any question? I think this video clearly shows the clear picture. At last you are supposed to change. बहुत अच्छा समझाया सर। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो 11th में ना केवल फाइनल एग्जाम का देखना है ना, 11th में 11th क्लास का फाइनल एग्जामिनेशन कह रहा है चौहान साहब, लेकिन आप इसको बीच में से भी ले सकते हो, बेस्ट का भी। ये कह तो रहा है फाइनल एग्जाम का, अगर बाई चांस बच्चे ने फाइनल एग्जाम नहीं दिया या कुछ है तो आप, ये मॉडरेशन कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो बीच के एग्जाम को भी ले सकता है। सर एक्सक्यूज मी, अगर बच्चे ने फाइनल एग्जाम का में रीटेस्ट आया उसका, सपोज क्लास 11, मैम रीटेस्ट का रिजल्ट लिया जाएगा। रीटेस्ट का मतलब आपने बिल्कुल रीटेस्ट का रिजल्ट लिया जाएगा, कंपार्टमेंट का रिजल्ट लिया जाएगा, कंपार्टमेंट रिजल्ट विद द फाइनल रिजल्ट, बिकॉज उसके पहले तो वो फेल था या उसके मार्क्स कम थे, जो भी था उसमें से आपका हमेशा फाइनल रिजल्ट माना जाता है। लेकिन वो हाफ ईयरली में तो ठीक था, वो हाफ ईयरली में ज्यादा अच्छे मार्क्स है, तो ऐसे हो सकता है कि हाफ ईयरली के ले ले। मैडम आपको पूरे स्कूल का क्राइटेरिया एक ही लेना पड़ेगा, या तो सभी का बेस्ट लीजिए, या सभी का हाफ ईयरली लीजिए, या सभी का फाइनल लीजिए। मैंने तीनों बड़े ऑप्शन क्लियरली क्लास 11th में हम हाफ ईयरली भी ले सकते हैं ना सबका। मैंने आपको क्या कहा मैडम, जब ये एक्चुअल में देखिए सर्कुलर नहीं कह रहा, ये आपके प्रिंसिपल साहब के ऊपर डिपेंड करता है। यू कैन टेक एनी बेस्ट ऑल्सो, you can take that 12th class का जो ऑप्शन है, you can take that thing also. It depends upon your moderation committee. Exactly. सर क्योंकि सारी चीजों का निचोड़ जो है जी, जो हमारा ग्रेड है वो मैच होना चाहिए। ग्रेड मींस जो बच्चे का बेस्ट एवरेज है वो भी ले लिया हमने, और इट शुड बी मैचिंग विद द रेफरेंस ईयर परसेंट आल्सो ऑफ द स्कूल ऑफ द सब्जेक्ट आल्सो। या वो 5% जब हम इंक्रीज करेंगे गौरव जी, ये उसी के लिए बोल रहा है, अगर उसके 5% इंक्रीज करने हैं, अब किसको इंक्रीज करने हैं 5%, किसके किसके मार्क्स से इंपैक्ट पड़ेगा, तो लास्ट 3 इयर्स के उसके बेसिस पे देखते हुए उसको ऑन दैट ग्राउंड वी कैन मेक द मॉडरेशन, दैट शुड बी कंपेयर्ड। वो कहा ना सर, वो लास्ट स्टेप है, वो तो बिल्कुल हमारा लास्ट स्टेप होगा ना, वो लास्ट का स्टेज है जिसमें कि हम बेस्ट और उसको दोनों को कंपेयर करते हुए हम किसी सब्जेक्ट को देखेंगे क्या करना है। सर ये रिजल्ट हमारा है जो स्टूडेंट फ्रेंडली ही बन गया हमारा, क्योंकि हमने अगर बच्चों को बेस्ट ऑफ आउट ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल देना है तो यानी कि स्टूडेंट फ्रेंडली रिजल्ट बन रहा है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं sir. Moderation will be done in the overall result, or it will be done separately overall मैडम, overall आप इसको सर मदान सर ओवरऑल कहिए, अगर हम बीच में बहुत कहेंगे ना तो सभी लोग बीच में नंबर बढ़ाने शुरू कर देंगे 5%। नहीं एक्चुअली क्या है, मॉडरेशन डजंट मींस, मॉडरेशन क्लियरली मैं आपको बता दूं, मॉडरेशन डजंट मींस टू इंक्रीज द मार्क्स, मॉडरेशन मींस टू जस्टिफाई द मार्क्स, मॉडरेशन डजंट मींस टू इंक्रीज द मार्क्स। ये थोड़ा सा आप हमें डिफरेंस लेना चाहिए। तो मॉडरेशन कमेटी जो है वो 5% पिछले साल के रेफरेंस ईयर के मार्क्स के बेसिस पे चेंज, मॉडरेशन के अंदर आप ये मान के चलिए कि आप मॉडरेट कितना कर सकते हो, चाइल्ड फ्रेंडली बन सकते हो। मॉडरेशन का मतलब मदान साहब का ये है कि आप भाई हाफ ईयरली लीजिए, बेस्ट लीजिए, चाहे वो लिए, वो आप इतना तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप हर एक में 5%, हर एक में तीनों में बढ़ा देंगे तो टोटल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक्चुअली मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, एक कविता मैम एक मिनट, मैं बीच में एक एग्जांपल दूंगा। एक्चुअली क्या है, बेसिकली ये नंबर बैंक है, ये नंबर बैंक। फॉर एग्जांपल आपका एवरेज है, सपोज एनी अमाउंट, सपोज करो 90, अब आपके 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे इंटू 90, तो जो आया वो नंबर बैंक मिल गया आपको। वो
अब आपकी ये मर्जी है कि वो सारे के, मान लो किसी को आपने 100 में से 100 देने हैं या आपने 98 देने, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको बनाना होगा ताकि हर एक के साथ हम जस्टिस कर पाए। ये ना हो कि हम बहुत ज्यादा ऊपर ले जाए तो नीचे सफर कर रहे होंगे बच्चे। तो बेसिकली क्या है, ये तराजू है, ये या तो यहां डालो या वहां डालो, लेकिन टोटल शुड बी द सेम। बिल्कुल मरान सर ने जो सवाल दिया है मैं इसको और थोड़ा जस्टिफाई करूं कि आपके पास पूरा का पूरा मार्क्स का आ गया। सपोज करो टोटल मार्क्स आपके बन रहे हैं 88 बन रहे हैं सपोज करिए, और आपको सीबीएसई कह रहा है कि नहीं आप 98 मार्क्स तक टोटल मार्क्स दे सकते हैं। अब कितने मार्क्स का फर्क आ गया? 10 मार्क्स का। ये 10 मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा, आपके टोटल नंबर ऑफ बच्चे, उतने मार्क्स, सभी के मार्क्स बराबर बढ़ेंगे। ये नहीं कि ये वाला बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है तो इसके नंबर बढ़ा दो, ये बच्चा तो नालायक था इसको नहीं देने नंबर। सॉरी, moderation means to give the allocate the marks to all the students. So there is a difference between 98 and 88. So 10 marks will be divided equally to all the students, or equally decreased to all the students, or equally increased to all the students. There should be no change. Got the point? One more thing, sir. Go ahead. हाँ जी, thank you, ma'am. Sir, CBSE portal जो online portal है, in that we have to make entries separately for 11th and 12th. 10th class entries will already be there. So that means that for making result, for doing a moderation and overall result, we need to change either 11th class marks or 12th class marks. Sorry, madam. Again, you are on the wrong track. 10th class, 11th class plus 12th class marks. Whatever the score will be there, final score, then your moderation will start. Not 9th class, 10th class, 11th class, 12th class separately. Your final moderation will start only after calculating your 10th class plus 11th class plus 12th class. That's 30 right, plus sir. 30 plus 40 after that. But 10th class marks are not changeable perhaps, because that Madam, is 20 in the given example. कविता मैडम एक मिनट, again I am repeating. मैं repeat कर रहा हूँ. There will be no change in 10th class marks, 11th class marks, 12th class marks. When you do the moderation can be done under the total marks. Total marks secured after calculating 10th class, 11th class, 12th class. जो final result बनेगा, जो final तीनों का total होगा, उसके अंदर प्लस माइनस करेंगे। ये नहीं कि आप 11th क्लास को बढ़ाएंगे घटाएंगे, 12th को बढ़ाएंगे घटाएंगे, नहीं। 10th क्लास प्लस 11th क्लास प्लस 12th क्लास, जो टोटल सम विल बी देयर, उसके अंदर देयर विल बी मॉडरेशन, नॉट सेपरेटली इन 11th एंड 12th। ओके, तभी मैं बार बार कह रहा हूं टोटल का मॉडरेशन होगा, इंडिविजुअली का बिल्कुल मत लेके। And the difference between actual result, good evening sir, and the difference between actual result and the required result as per the reference here will be divided amongst all the students in proportionate way, यानी कि equally. And that will be done only in the final result. जो तीनों का total sum होगा उसका होगा, बीच में बिल्कुल, otherwise क्या होगा, 11th में ऐड करोगे, 12th में ऐड करोगे, it will be different. वो that's what I said. One question. So moderation last step हमारा, moderation last step है हमारा. Yes. Sir, I just have one question. एक second. Sir, I just have one question. Sir, my school was going to be appearing for the exams for 12th boards for the first time. So what would be the reference here in this case? Because it was the first board exam. Similarly, class 10th का as per the अभी तो circular the CBSE is not issued, but we are expecting the same way just like in class 10th. What is the you can say the average score of your nearby school or your district or your you can say state? On that ground, your score reference here will be calculated. Sir, one minute. I want to ask you, how is this moderation done? I haven't understood as yet. Again, I'm saying. 1 minute. Let me finish the question. अगर हमारे जितने भी बच्चों का एवरेज आया उसके हिसाब से हमारी परसेंटेज एवरेज इज 4% लेस, तो हम हर सब्जेक्ट में 4% ऐड करेंगे या 1 mark in every subject? How do we do it? Madam, there are the two references. There are two things will be given. One subjective reference and second total school reference. So subjective reference you are supposed to make the calculation. Let us assume it is 4% plus. Let us assume कि मीनाक्षी गुप्ता मैडम के अकाउंटेंसी में टोटल बच्चों के मार्क्स 900 टोटल आ गए, टोटल सभी बच्चों के मार्क्स। लेकिन सीबीएसई कहता है एज पर द रेफरेंस ईयर यू कैन इंक्रीज टू 950 मार्क्स। Okay. So 950 और 900 का डिफरेंस 50 हो गया, 50 marks divided by all the students. And that will be added to every child. Every child, all the students. Okay. Now example second, economics. Meenakshi Gupta madam says 980 marks total.
but CBSE says no, it is 930 marks. Again 50 marks less. So 50 marks divided by total number of students, minus to all the students. Okay. Got the point? So Yes. this we are supposed to calculate separately. So Yes. that will make total differences here. Thank you. Thank you. Sir, Thank I you. also have a query. Yes. Nikita Goyal, sir. I also want to ask something. If that +5 and -5 that is permitted to us, that permission is for the subject or in the overall average? Subject, madam. Right now it is subject. Only in the ओवरऑल subject. ओवरऑल की बात अभी आ नहीं कह रहे, वो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. सब्जेक्ट अभी मैंने कहा मीनाक्षी मैडम को ना इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी का अलग अलग बताया मैंने. एक में प्लस किया आपने, एक में माइनस किया. टोटल के अंदर अगर आप फिर ये कहेंगे कि मीनाक्षी मैडम कहते नहीं मेरे स्कूल में इस साल के बच्चे सब लोग बहुत अच्छे थे, तो टोटल परसेंटेज फिर उस एरिया का, डिस्ट्रिक्ट का, जैसे अभी मयंक अरोड़ा जी ने भी पूछा कि मेरे यहाँ फर्स्ट टाइम 12th क्लास है, मैं क्या लूँ रेफरेंस, तो वो आपका टोटल एरिया का रेफरेंस हो सकता है. फिर हमें रिप्रेजेंटेशन देना पड़ सकता है कि हमारा मार्क्स दूसरे स्कूल्स के ज्यादा अच्छा हो सकता है, तो वो एक अलग चीज है. वो रिव्यू कमेटी एक अलग लेवल की जाएगी, वो दैट इज अ डिफरेंट इशू. ओके, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होगा. So, sir, are you trying to say कि if in accountancy I am adding 5%, so in economics I will have to subtract 5% to match it with overall percentage? सॉरी अगेन आई एम रिपीटिंग. मैडम निकिता मैडम बड़े सीरियसली सुनिए. मैंने कहा आपके 900 मार्क्स अकाउंटेंसी में टोटल बच्चों के आए, लेकिन सीबीएसई कह रहा है कि आपके 960 मार्क्स होने चाहिए. आपका रेफरेंस 960 के हिसाब से बना हुआ है. आप तो 60 मार्क्स टोटल बच्चों के बीच में डिवाइड करिए, कर दीजिए. लेकिन इकोनॉमिक्स में आपने कहा कि हमारे बच्चों के मार्क्स 970 आ रहे हैं, लेकिन सीबीएसई कहता है नहीं 920 से ज्यादा आप नहीं दे सकते. तो कितने मार्क्स का डिफरेंस हो गया? 50 मार्क्स का सर. 50 मार्क्स का, तो 50 डिवाइडेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, ये माइनस होंगे इकोनॉमिक्स में. Okay. No, this is दो सब्जेक्ट आप नेगोशिएट Understood. Sir, I want to ask one negotiate thing. the two subjects. Sir, I want to ask one thing. Can I ask? Yeah, please. One thing I have to ask, the reference here saying we can take this, there are 3 streams in the school: science, commerce and arts. So we have to take different. Madam, here subjective reference will be there. Total school reference will not calculated because science का, commerce का और arts का result तीनों का अलग अलग होगा. So it That's will be why the here science- we are supposed to take the subject reference. Subject reference will be given to you. Suppose in science we get 100% result. Madam, why Last you are year- taking science? You take physics, chemistry, bio like this. So like this we have to take. Thank you. Subjective reference, not stream reference. Sir, may I ask one question? Yeah, Nisha. Yes, good evening, sir. Sir, as you said that CBSE is going to give us Excel sheet for 10th class, 30% weightage. But sir, is it necessary to check those, content? We have to check with the Not required. marks. Not required. Sir, actually my principal ma'am is saying that RO send a message that If you have the calculation, no, they are saying to check whether the roll number is same or not. Okay. Just like Only the Madan sir roll says कि ना हमारे को भी मिला है, एक शीट आया हुआ है, उसको चेक करिए. अब उसमें हमें नंबर किसी के चेक नहीं करने, उसमें बच्चे का रोल नंबर चेक करना है. लेट अस अज्यूम आपके हो सकता है पुराने बच्चे जो हैं उन्हीं का पूछ लिया जाए. सम कंफ्यूजन हो सकता है कि निशा के नाम से कई लोग हों वहां पे. अब वो निशा का रोल नंबर का डाउट हो जाए, हो सकता है इसी साल में आपके स्कूल में निशा 3 हो. अब वो निशा का रोल नंबर 10th क्लास में कौन सा था, वो डाउटफुल अगर केस में होता है, कहीं पर मिसमैच बनता है या सीबीएसई उसको फाइंड आउट नहीं करता, तो वो आपसे पूछेगा. 90% आपका सेम होगा. 2 केसेस में डिफरेंसेस वहां पे होंगे, जहां पे आपने बच्चे ने नाम चेंज किया हो, रोल या फादर नाम चेंज किया हो, कोई रीजन ऐसा हो, या दूसरे बोर्ड से आ रहा हो. यहाँ पे 2 चीजों का फर्क होगा, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होगा. सर यहाँ पे मेरी एक क्वेरी थी, प्लीज मैं आस्क, इसी से रिलेटेड एक क्वेरी है. अमीशा मैम, सर ये क्या जो एरर है, मिसमैच है, कैन इट बी बिकॉज ऑफ द चेंज इन द नेम? जैसे किसी का हितेश शर्मा था तो बाय मिस्टेक हितेश लिखा गया, ये मिसमैच उस वजह से भी आ सकता है? नहीं मैडम, अगर हितेश शर्मा से हितेश लिखा गया और आपने उसको चेंज करवाया, 10th और 12th क्लास में उसका हितेश शर्मा और हितेश का हो गया, अगर उसके रिकॉर्ड में उन्होंने आपने चेंज कर दिया सीबीएसई में, तो इट्स ओके. कई बार क्या हुआ कि बच्चों का रिकॉर्ड अभी इन प्रोसेस में है, बच्चों ने नाम तो 12th में चेंज करा लिया, वो प्रोसेस में है, लेकिन 10th में नहीं हुआ, क्योंकि इस समय कोविड के अंदर कई फाइल्स पेंडेंसी में चल रही हैं जिसमें अभी चेंज ऑफ नाम नहीं हुआ. चेंज ऑफ सर इट मे बी बिकॉज ऑफ एरर, जैसे 10th में एरर, अगर एरर है तो वो तो बिल्कुल अलग से ही फाइंड आउट हो जाएगा.
तो वो फिर सर उसी में अपडेशन, मतलब ये भी कारण है बिल्कुल ये उसी चीज का अपडेशन है, बिल्कुल उसी चीज, क्योंकि वो बच्चे हमारे स्कूल के हैं, लेकिन वो 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनका नेम और स्पेलिंग एरर है, उस वजह से मिसमैच आया। स्पेलिंग का है, वो लिखा हुआ आएगा, उस पर रोल नंबर पूछेगा कि 12th का रोल नंबर आपका ये है, 10th का रोल नंबर बताइए और वो कौन से बोर्ड से वो बताइए। तो उसको आपने जैसे मदान सर ने बताया ना कि आपने उसमें बताना होगा कि 10th का रोल नंबर इसका ये और कौन से बोर्ड से था। तो जैसे एक बच्चा है, शी इज फ्रॉम सम यूनिवर्सिटी विद्यापीठ से, तो वो तो कोई बोर्ड है नहीं वहाँ पे। नहीं मैडम, वो सारे बोर्ड उसमें मेंशन है, आपके जितने, अच्छा वो मेंशन होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जितने बोर्ड अप्रूव्ड हैं वो सारे के सारे बोर्ड है, और लास्ट में अदर बोर्ड भी लिखा हुआ है। अच्छा वो ड्रॉप डाउन करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पे सर दिखा दें, यदि किसी के पास हो तो यहाँ पे दिखा दें सर हम पोर्टल, बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी यूज्ड दैट पोर्टल। या गौरव सर प्लीज, मिश्रा सर दिखाने की आवश्यकता नहीं, उसको अपने आप ही है उस साइट पे। या गौरव जी। मिश्रा सर, इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट taken any particular subject in class 11th, but under special permission he or she has opted for the same subject in class 12, like for example physical education, 11th class में बच्चे को मैथमेटिक्स था, 12th में under special permission he opted for physical instead of mathematics. अब 11th से 12th का रेफरेंस कैसे लेंगे हम in the same subject? सर अभी ये गौरव जी मैंने अभी बताया कि इसके लिए अभी सर्कुलर आएगा, अभी डाटा इकट्ठा किया जा रहा है कि कितने बच्चों ने ये सब्जेक्ट चेंज किया है, उसके लिए पॉलिसी कौन से सब्जेक्ट्स की हैं, वो पहले वाला कौन सा मेन सब्जेक्ट था और ये वाला कौन सा सब्जेक्ट है, उसका प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने फर्क पड़ रहा है। अगर वो मैथमेटिक्स से फिजिकल एजुकेशन पे आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वी अज्यूम दैट हियर ही इज गेटिंग द एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो वो अभी कोई ना कोई एक स्ट्रीमलाइन बनेगा कि उसको हम बेस्ट 3 का ले लें, जैसे हमने आपका 10th क्लास का किया है। राइट नाउ इट इज वेरी टू मच अर्ली टू से समथिंग, दैट इज येट टू बी डिसाइडेड। इसकी पॉलिसी आएगी 25th के बाद आएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपको याद होगा 10th का बेसिक मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स अभी तक सर आ रहा है, इंग्लिश का फर्क अभी भी आ रहा है, अभी भी वही मैं बोल रहा हूँ है ना, तो अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज पे बैठे हुए हैं हम लोग। सर वन कंसर्न सर, you just mentioned that for accountancy it is 950 now. Suppose you gave an example, so everybody's marks are increased by the average of that we've kind of calculated. Economics में कम हो गया तो इसलिए सबका डिडक्ट किया। सर हो सकता है कि मेरा जो बच्चा है must be in a 100 category. सिंधु मैडम आई एम जस्ट स्टॉपिंग हियर। यहाँ पे बच्चे को नहीं देखना है, यहाँ पूरे स्कूल को एक साथ देखना है, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पे रेफरेंस को देखना है, बच्चे ने जो स्कोर किया उसी में हम ऐड ऑन कर रहे हैं। आपका टोटल जो बच्चे का मार्क्स था, ज्यादा मार्क्स था, उसको एडवांटेज पूरे स्कूल के बेस पे मिलेगा। आपका जो रेफरेंस को कंपेयर कराए, अगर वो बच्चा अच्छा था तो वो 950 का तभी उसका जुड़ा हुआ कितना अच्छा था वो उसमें ऑलरेडी ऐड ऑन है। अब कितना और ऐड ऑन करना है वो तो उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो आपके पिछले स्कूल के और पिछले अच्छे कर्म हैं जिसकी वजह से और सीबीएसई दे रहा है। तो आपको तो आप इंडिविजुअली चाइल्ड वाइज मॉडरेशन नहीं कर सकते, इसके लिए वो अलग से एग्जामिनेशन दे सकता है। How do I justify that? Sorry मैडम, it is justified because it is school based. ये स्कूल का रेफरेंस है, बच्चे का चाइल्ड रेफरेंस नहीं है मैडम। तो स्कूल रेफरेंस का हकदार सभी का है, वो सभी के लिए नहीं। वो बच्चे को मैडम वो बच्चे का लॉस नहीं है, आप इसको बड़े ध्यान से देखो। वो आप किसी एक बच्चे के साथ इमोशनली अटैच हो रहे हो इसलिए ऐसा कह रहे हो, अदरवाइज ये स्कूल का पूरा रिजल्ट है, यहाँ स्कूल को पूरा एडवांटेज मिलेगा। यहाँ ग्रुप है, यहाँ पे एक इंडिविजुअलिटी को हम नहीं देख सकते, तो यहाँ पूरे स्कूल का रिजल्ट होगा। यहाँ सर वो 100 कई सालों तक चलता है ना टीचर के साथ, so that is why वो एक बच्चे का 100 है, वो 100 में से कितना 5 आप ऐड करोगे। अच्छा एक और भी चीज हो सकता है कि किसी का टोटल 100 आ रहा है लेकिन 5 मार्क्स जोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो वो 5 मार्क्स जो है वो 9, सपोज करो 100 स्टूडेंट्स है, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर सपोज करो आपको 100 मार्क्स ऐड ऑन करने हैं और 100 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा है, सबको एक नंबर मिलेगा, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसको 100 में से 100 मिला हुआ है, तो क्या होगा, वो एक नंबर 99 के बीच में बटेगा, देन दैट वन नंबर विल बी डिवाइडेड अपॉन 99। तो ये जस्टिफिकेशन है आपकी। So why can't we do it this way? So the child has got 100, leave the child, जो बाकी 99 को डिडक्ट करना है वो भी डिडक्ट कर सकते हैं ना सर। नहीं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आप चाइल्ड इंटरेस्ट में, स्पेशल चाइल्ड इंटरेस्ट में कर रहे हैं, स्कूल इंटरेस्ट में या बोर्ड उसके फेवर पे नहीं कर रहे।
So there'll be 10 Policy doesn't allow. Policy not allow, madam. Bindu ma'am, I don't think in internal marks किसी को भी 100 मिलेगा. Class 12 में. Chale, ma'am, any more question? Yes, sir. Please. Just one question, sir, I have. Sir, we had online 12th class examinations throughout the year. Sir, so for how long we have to keep the exam PDFs and all as evidences? Sir, That you are supposed to keep at least 6 months after the result declaration. Okay, sir. As per the CBSE records, as per the CBSE policy, you are supposed to keep 6 month records after the final examination declaration. Okay. Sir, I also want to one ask question, something. sir. Yeah. How do we have to send the rational document, sir? For class 10th also, we have made the rational document, but how it has to be sent to CBSE? For the class 10th, you will get class 11th and class 12th. There will be chart, Excel sheet will be there. You are supposed to fill that marks automatically. The total. Sir, I am asking the rational document that was annexure 2 in the tabulation format. The rational document which is signed by the external members also and internal result committee also. And you are supposed to through Harkara portal, madam. Okay, we have to upload it in a Harkara portal. Yes. And sir, is there any hard copy also to be sent for the result? Hard to copy is CBSE? not right now received by any one of the regional offices. They are just taking through all the mails through Harkara portal. Okay, sir. Okay. Thank you so Excuse much. me, sir. I'm Aarti Berry. I just wanted to ask that whatever criteria we take for class 12 students, will it remain this we take same for all students? Or it can vary from student to student? Madam, Or it can again, I am vary from repeating- subject to subject? No, madam, I am again saying either you take the option best, either you take half yearly, either you take final, only one option you will take. If you are Right. saying best, so you can take the best to all. But you are supposed to opt the formula for all the students in the similar manner. You not supposed to take as per your choice. And for the subjects also same? Subject also. Sir, even Thank you so much. Class 12th also same thing. Same, madam. Okay. Okay. सर think एक I had a बार एक replied- क्वेरी आ रही है मैं मिश्रा जी बेसिकली जैसे मैं देख रहा हूँ चैट में वो कह रहे हैं कि नहीं 11th में परफॉर्मेंस उस बच्चे की अच्छी नहीं है और उसकी वजह से उस बच्चे को लॉस होगा इन द एनुअल एग्जामिनेशन और या इसका रिजल्ट कंपाइलिंग में तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि मॉडरेशन होना है क्योंकि 10th का 11th का 12th का सब ऐड होना है उसके बाद फिर मॉडरेशन होना है सो व्हेनेवर यू फील कि यस मॉडरेशन इज रिक्वायर्ड यू कैन डू इट सर मदान सर मैं इसमें एक ऐड ऑन करूंगा बच्चे सारे अच्छे हैं मैंने खुद कहा कि मैं हाफ ईयरली तक खुद 11th क्लास में फेल था अपने सब्जेक्ट में और ये तो हुआ नहीं कि मैं अकाउंटेंसी में हाफ ईयरली तक फेल था तो इसका मतलब मैं अकाउंटेंसी का टीचर नहीं बना या पीएचडी नहीं की मैंने दैट इज अ डिफरेंट इशू हाफ ईयरली तक आई वाज नॉट सीरियस इन माय स्टडीज ड्यू टू द टू रीजंस की बिकॉज आई वाज सिलेक्टेड इन इंडिया आई वाज प्लानिंग टू गो टू बिकम द गवर्नमेंट सर्वेंट तो मेरा मकसद कुछ और था तो दैट वाज द आइडिया मोस्ट प्रोबब्ली यू फाइंड आउट टिल हाफ ईयरली यू विल फाइंड आउट लेस मार्क्स टोटल स्कूल का लेस मार्क्स होता है क्योंकि वो स्टेज होती है सो फाइनल एग्जामिनेशन में एवरी चाइल्ड स्कोर वेरी गुड फाइनल एग्जामिनेशन आई स्कोर 3rd पोजीशन इन माय स्कूल वो जंप था मेरे लिए तो इट डजंट मीन्स कि आपका जो हाफ ईयरली में स्कोर है वो वहां पे जाके कोई कुछ इम्पैक्ट करेगा तभी सीबीएसई ने यहाँ पर फाइनल वर्ड कहा है मैं तो आपको कह रहा हूं जो भी बेस्ट हो आपका फाइनल ही बेस्ट होगा देखना फाइनल का ही रिजल्ट बेस्ट होगा तो फाइनल में से यू कैन टेक इट अब ये मैं कहूं कि 11th में उसने पढ़ाई नहीं की या 11th उसका ये स्टेज पे था तो दैट इज अ डिफरेंट इशू ऐसे तो 12th क्लास में अभी अगर मैं एग्जामिनेशन सीबीएसई ले ले तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो शायद बच्चा काफी कुछ अच्छा कर पाएगा कुछ कर पाएंगे लेकिन काफी कुछ नहीं कर पाएंगे आप वो परसेंटेज को देखते चलिए पैंडेमिक कंडीशन में रिस्क फैक्टर को देखते हुए इससे बेटर इलाज सीबीएसई के पास या किसी के पास नहीं था जिसमें वी आर गिविंग जस्टिफाइड टू ऑल द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हमें ब्राइट स्टूडेंट्स को ही नहीं देखना हमें दूसरे वाले स्टूडेंट्स को भी देखना है हमें रिमोट एरिया वाले बच्चों को भी देखना है हमें सारे टाइप के बच्चों को देखना है तो वी आर सपोज टू सी ऑल द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स नॉट फॉर स्पेशली की ब्राइटर है जो बिल्कुल अच्छा स्कॉलर है मदान साहब की तरह हमेशा टॉप में 100 में से 100 मार्क्स लिए हुए उसने तो हम हमेशा मदान साहब के लिए कहें और बाकी किसी के लिए बात ही ना करें गौरव की बात ही नहीं करें गौरव बेचारा पूछते हैं नहीं क्वेश्चन कहाँ गया गौरव की कोई पूछे नहीं कि हम ही गौरव तुम्हारे मार्क्स कहाँ गए क्यों हुए तो गौरव को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा मदान साहब के इक्वलेंट रखना पड़ेगा कि गौरव और मदान के मार्क्स एक जैसे हो तो वो हमारे इक्वल वेटेज दोनों को मार्क्स बराबर बराबर बांटने पड़ेंगे
क्योंकि दोनों ने क्लास में बदमाशियां तो एक ही साथ की होगी ना। हाँ बिल्कुल। सर वैसे खुशी मिलती है कि अच्छा वो हमारे टाइम पे कोरोना नहीं आया था। ना इतना भगवान करे आगे कोरोना ना चले। सर कभी नहीं आना चाहिए था। हेलो हेलो बनाने में तो एज अ बच्चा हेलो यस मैम यस। एक या विनायक मैम कुसुम। हेलो Yes, हेलो ma'am, your voice is there. You want to ask the question. गुड इवनिंग मिश्रा सर, आप मुझे कुसुम मैडम आपकी आवाज आ रही है, आप क्वेश्चन पूछिए। या हेलो हेलो हाँ बोलिए मैडम, मैम, बोलिए आपकी ना। आवाज आ रही है, हमारी शायद इस साइड से आपकी हेलो आवाज आ रही- हाँ सर, मेरे को 11th के रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट करना था। देयर इज द, हाँ सर गुड इवनिंग। 11th में जो सब्जेक्ट है सिक्स्थ जो सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल, उसके बारे में बताएंगे सर। 10th में तो बेस्ट 3 ले दिए। मैं आपको क्लियरली बता दूं, 10th क्लास का तो 5 सब्जेक्ट के 3 के बेस्ट के बेसिस में, चाहे बच्चे के पास 12th में 6 सब्जेक्ट हो 7 सब्जेक्ट हो, वो सभी में इक्वल मार्क्स जाएंगे 10th के, वो कोई चेंज नहीं होगा। फॉर क्लास 11th एंड 12th बिकॉज दे आर पास इन द 11th एंड 12th क्लास, तो वो वॉट एवर द पास ही हैज सिक्योर्ड इन 11th क्लास उसका 30%, वॉट एवर ही सिक्योर्ड इन 12th क्लास उसका 40% कैलकुलेशन बेसिस पे वी आर सपोज टू टेक। अज्यूम कि 11th क्लास में अब वो कह रहे हैं कि सब्जेक्ट नया ले लिया उसने या नहीं किया, उसका आपका क्लैरिफिकेशन यू विल गेट वेरी सून आफ्टर 25th ऑफ जून। Sir, good evening, Mishra sir. Good evening, Madan sir. गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। I'm Lomina sir, Lomina Rajiv. सर मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमें क्लास 10th में दे रखा था the reference year, and again they have given the criteria that these many students should be getting below 28 या 30 to 40 के रेंज में होना चाहिए या 70 to 80. This range will we be getting if for class 12th also? Yes, when ma'am. we'll get the reference Yes, here. yes, you will get. So तब सर जो हमारे जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपने कहा है, जो मॉडरेशन करना है, तो वहाँ थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है। सपोज अ चाइल्ड इज देयर हु इज गेटिंग ओनली 28 मार्क्स और वहाँ रेफरेंस ईयर में भी दे रखा है कि 28 देना है, तो हम उसको पास कर सकते हैं, ऊपर लेकर आ सकते हैं? कैन वी गेट हिम इन 35 या 40? Automatically when you find out, automatically all the childs are passed because you are getting 30% marks weightage of the 10th class and you are getting 30% weightage in the 11th class. Sir, then actually the problem is when we take up the reference year, we are not able to put all the students in those range. Madam, there will be subject reference. Subject wise also. Suppose I'm getting it for accountancy. Here the criteria of you can say weightage of less than 26 or 26 to 40, like वो 80 to 70 to 80, that weightage will be not given. अच्छा, maximum marks I said ना कि वो मैंने calculation accountancy और उसका economics का दिया था. In 10th class तो subject का range they had fixed up. Yeah, here range we are not supposed to see. Here the total marks will be there. Okay, that will be better. That will be better. Thank you very much. मैंने यूज किया था मैम, लोमिना मैम, मैंने बताया ना जैसे मार्क्स बैंक मिल गया बेसिकली। Yeah, got it sir, got it. Because for class 10 this was a problem. Yes. Putting them in the range. Yeah, वहाँ पे रेंज का इशू था, यहाँ पे रेंज का इशू शायद नहीं होना चाहिए। Okay, thank you sir. Thank you very much. Given all the replies and I think Sir, एक last question sir, please. Yeah, Pooja ma'am, please. Sir, can physical education teacher be a part of the member of internal committee if he's a senior most? There are the two things, madam: PGT physical education or PET. There are the difference between PET and PGT physical education. Okay. If it is PGT physical education, you can take. Can be. If it is PET, PET means the grade pay is equivalent to TGT grade, then you cannot take. Okay sir, thank you sir. मदान सर अच्छी तरह जानते होंगे दिल्ली में there is a difference between PET and PGT physical education. Thank you sir. Okay, thank you. एक मिनट सर, ये फॉर्म है और फॉर्म प्लीज भर दीजिए सो दैट आपके जो सर्टिफिकेट है वो फॉर्म के अकॉर्डिंग हम बना देंगे, क्योंकि इस बार हमने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया. वी हैव डायरेक्टली इनवाइटेड यू ऑल फॉर द मीटिंग, राइट? सो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दैट फॉर्म इन चैट, so please fill that form and we will make the certificate and we will just share it with you. And I think it would have been a very constructive and very informative session for all of you.
Yes, sir. जी सब प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए प्लीज. My humble submission to you. Please put your camera on. All of you, yeah. All of you are requested to please put your camera Sir, we are on. not able to do ये it. कहाँ है? It says that access नहीं है. Okay. Yes, sir. I वो भी also, कर sir. सकते हैं. I also, sir. Feedback form. Just So the same form which is says for certificates, sir, the feedback form? yeah, same. This is. One last question. Yes, ma'am. Sushma ma'am, yes. Yeah, only 1 minute. Sir, can you recap the basic work of external, sir? External, there is actually you are supposed to sign the paper virtually. You can sign only. Not you are supposed to go to the any school. The meeting will be conducted on the you can say virtual meetings will be there, and you are supposed to send your signature virtually only. Okay. And technical work, sir, like No technical work. External का कोई technical work नहीं है. आप लोग सिर्फ सुनना है, पेपर साइन करना है. Okay. आप तो चाय भी नहीं पी सकते ना कहीं जाके आप. And 2 externals and 3 internals, you said, sir. How many internals? 5 plus 2. Okay, sir. Thank you, sir. It is already there, or I'll share it in the group. It is already there. Notification from CBSE, and they have described each and everything. Yeah. Yes. 3 plus, sir, not 5 2 in PGT. 2 internals plus 1 plus 2 special it's there. invitee. 1 special invitee as IT teacher. Yeah. IT teacher is separate. And altogether 5. 2 Yeah. internal members Two were given, internal and 2 external. one chairperson. With the That is principal. principal. That is principal. Yeah, 1 principal, 2 internal. 1 chairperson and IT. That's it. Yes. IT department. Yeah. Or I can just share with you the detail which has been sent by CBSE. Or I think you must be having. Everyone must be having, I suppose. सर क्या जरूरत है क्या सर उसको यहाँ पे शेयर करने की? सर जो मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा था. No problem, you can share it, or everybody can see the. I request all the. उसको लास्ट हाँ उसको कर लेते हैं. Yes. थोड़ा सा एक बस last एक recap हो जाएगा. अभी आप 1 week तक you just go to the CBSE portal. Just a minute, I'm just sharing it, please. Just a minute, please. If you allow, sir. I'm just sharing, please. Sir, they can take this from the website also. Yes, it is there. You can take it from the website also. This is just for recap purpose. So just for confirmation, Mr. Sir, for skill subjects and all the subjects wherein students are less than 10, we have to just award average of best 3 scores. And that too in the end, we don't need to do any calculations of 10th, 11th, 12th. Actually, for the vocational subject, it will be order this special you can circular will come after 26th. Right now, only the main subject they had given the idea, because that document is submitted to the court. That's why it is in the hurry up. Now, whatever the pros and cons will be there, and whatever the other things will be there, it will be discussed after 26th, after collecting the data basically. On the basis of the data, they can do all these things. Okay, sir. So Dinesh, sir, can you please share that link for feedback? Mishra sir, Mishra sir. Yes, ma'am. हाँ, एक query और है. Like अभी आपने बोला this is a 5-member committee, but the circular which we got, the 17 page, it says yeah, ma'am. This is each school shall form a result committee. हाँ, 2 senior most PGT. 2 senior most PGT लिखा हुआ है. 2 external members, 1 principal, and we can get special invitees. Madam, that for the signature purpose,
I request you take the 2% senior PGTs also. Instead of 2 PGTs, you can take the 5 PGTs also. And out of that 5, why I'm saying the 5 PGTs? Because at least one from the science stream, one from the commerce stream, one from the language, one from the humanities. 4 तो यही हो गया आपके normally. And if you have the vocational, so your vocational subject should be there, or some psychology or some special educator. So it will much better. वो उन्होंने minimum आपको बताया, maximum you can take the committee yourself as per your choice. So it is the minimum committee. So उन्होंने कहा minimum 2 PGT should be there. यही स्लाइड है सर अभी जो आप दिखा रहे हैं बिल्कुल मैडम वो मिनिमम की बात है। अच्छा मिनिमम के लिए ओके साइंस और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज और नहीं दे विल बी कॉल्ड एज स्पेशल इनवाइटीज नो दे विल बी कॉल्ड एज yes committee member also no problem. Okay, fine. Because they're actually we are talking in terms of remuneration also. So maybe Not that is the confusion. No, the signing authority. Remuneration you will distribute. You will get only for the 2 people. No. Yeah, that's it. Yes. But so the basically here the accountability, no? Accountability. Accountability. Moderation shall be carried out in class 11th and class 12th. No scaling can be done in class 10th as marks are already standardized. Yes, right. Class 11th also moderation. Excuse me, sir. School will use the subject-wise average of reference year for the moderation. I think we have already discussed in detail this point. The subject-wise marks assessed by the school for 2021 should be within a range of plus minus 5 marks. This also we have discussed in detail. Overall average marks for the school assessed in 2021 for all subjects should not exceed the overall average marks obtained by the school by 2 marks in specific reference year. For subject 5 plus minus, and for average it is 2 marks. Dan sir, if you allow me, kindly give me permission to leave. We are just making it over, and these are the dates. 23rd is the last date for class 10th verification, means tomorrow. Okay, so I'm just stopping it. Sir, could you please share the feedback link? I'm not able to find it. I'm just sending it again, please. Yeah, thank you so much. I think you all must have got it now. Yes, all of you are requested to please put your camera on so that we can take a photograph. So one last time, Padma Priya here. I am sharing, sir. I am writing on the chat box. I am writing my number. If you have to all the peoples, kindly WhatsApp me. It's much more better. I will give the reply on the WhatsApp. Don't call, you just WhatsApp. If I require, definitely I will call you. Sir, one last query while we are talking. In class 11, CBSE had come up with a solution that gave grace marks up to, I think, 12 marks to a student to get him through. So, are we going to consider the marks where we have given the grace? Sure, madam. Whatever the marks percentage given in the class 12 for promoting that class, either for the compartment examination, or either we are giving this marks is given to the child, it means it will be part of the marks. You are supposed to take it. I think sabhi ki queries jo hai, it must have been resolved, and in conclusion, I would like to extend my hearty thanks to CB Mishra sir for sparing your most precious time as always, because I know being a principal of such a reputed school in Delhi, and you keep on contributing a lot to the society. So we really feel blessed to have you with us. And of course, you have clarified a number of doubts of our teachers, and definitely it would be very helpful to all of them to prepare the annual result for class 12.
And of course, as I was seeing in chat also, they are requesting to hold another webinar after clarification from CBSE. Of course, if we do find that there have been added clarification by CBSE, so we can plan another webinar also. But till now, thank you so much everyone for sparing your most precious time, and of course for making this session the most successful one. Thank you so much. Thank you If any so one much. of you, if any one of Thank you you, would like to Mishra add sir. anything, Thank you, sir. Thank you, Madan sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you for so much of patience to catering to all our queries. Thank you very much, sir. we all are the part of the same family, ma'am. We are not different. It is a family, commerce teachers family. This is not foundation, right? So each one of you. Each one of you. Thank you to all. Thank you. Thanks a lot, Thank sir. you so Thank much, you. Madan sir. Thank you so much, Mishra sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Very great of you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. But it was a very interactive session and everybody participated in it. Thank you so much, sir. Madan sir, Madan sir, can you please tell me 23rd is the last date for what? You was just showing the slide now. 20. This is for verification of class 10th names. Class 10 जो मैंने names? कहा कि आप देखना उसमें पोर्टल में जाएंगे, वहां पर आपको मिलेगा जो बच्चे उसमें दिखाई देंगे जो कि किसी और बोर्ड से आए हुए हैं आपके यहाँ क्लास 11 में, उनके नाम। उसके लिए तो सर 24th लास्ट डेट दिखा रहे थे सीबीएसई पोर्टल। अभी जो दिखा मैंने उसमें वो 23rd था, मे बी 24th हो उसमें। हाँ सर, एक सेकंड के लिए अगर आप एक सेकंड के लिए वो स्लाइड दिखा देंगे, आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट। क्योंकि ये स्लाइड जो है, हाँ जस्ट अ मिनट मैम, प्लीज जस्ट अ मिनट, या मैं आपसे अलग से शेयर कर लूंगा, हाँ इफ यू विश सो। हाँ, no problem sir. Anyways, either you can share it personally. जी। Can we get this PPT actually? बहुत सारी चीजें हैं. We can see it later. Okay, I'll just put in the group. Please. Okay sir. Okay. Thank you so much sir. Thank you so much. Thank you. Please. Madan, if you don't mind. जी। बताइए सिंधु मैम, प्लीज। The clarity we got from you was very Huh? The clarity we got from you, sir, that was also very good, sir. Actually, you could have also taken one session. Because he's such a senior person. He's a very senior man, right? No, sir. The thing is, sir, you understand our level. Now, sir, you come down to our level with the examples, and then you explain it. It's very easy for us to absorb it. High level पे इतना समझ में नहीं आता sir. We understand what you're trying to do. You come to us, you come down to our level to make us, split it and examples they can. सीखने में तो बच्चे ही हैं अभी। नहीं मैम, बिल्कुल, because अपने आप को उस जगह पे रखें ना, तो I think that would have been better. In fact, sir, I sent you a personal message. So मतलब ऐसा लगे जैसे कि as if I'm preparing the result, right? And so if you think in those lines, naturally आपकी learning different हो जाती है उस केस में, है ना? तो ये है। चलिए, anyhow, thank you so much once again. बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके यहाँ पर। Actually, we could see everybody, sir. वो भी अच्छा लगा sir. Of course, it is a platform, है ना? Seriously, sir. Seriously, enjoy this, sir. जी। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. इस बहाने ही सही कम से कम मिले तो सही हम लोग। मिले तो सही सर। दिशा मैम को इतने दिनों बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you, sir. मनीवेज मैम। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Sir, एक रिक्वेस्ट है, सर, humble रिक्वेस्ट। एक जो लास्ट ईयर आपने करियर ऑप्शंस वाला वेबिनार करा था सर, वो एक बार जरूर अगर दोबारा हो सके तो उसका अगर लिंक हम सर करियर ऑप्शंस करियर ऑप्शंस सर। ओके, यस सर। सो अगर उसका हम दोबारा करा लेंगे, क्या हो गया? हाँ जी सर, यस दोबारा कर लेंगे कोई बात। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए, हाँ, ओके, बाय, सी यू प्लीज, टेकिंग इट ऑफ नाउ प्लीज, थैंक यू।